मॉड्यूल्स को सेपरेट कर रहे होंगे कि आपका मॉड्यूल है तो दैट इज रन सेपरेटली एक्सटर्नली। ये इसका बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है। अनदर आई वांट टू लेट यू नो कि हमारे पास मल्टी मॉड्यूल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे कि हम इस entire year में completely work कर रहे होंगे and that is like कि every feature will be with separate module. So this is the aim, this is the objective. So that's why you guys all have to understand it in detail, and if there is any doubt, please ask. Okay? Yes, ma'am. So we have a monolith app, and we call it the IndiaMart app module. If you had seen in the project structure, we have a cropper, which is a third-party library, and we have one single app module, which is the IndiaMart app module. So what we have to proceed is, we all will be working in particular feature modules. So these feature modules will be there like LMS, BMC, ByLead, Profile, BizFeed and all. One application class or the one single, or I should say that who will be gluing together all the feature modules will be there, and some classes will be there in that. Like here we are showing it as main app. It is our application class. So he will be guiding all the feature modules together. So let me show that the main app depends on the feature modules. Feature modules depend on the shared modules and the library modules, or we call it here the core modules. So speaking simply, the IndiaMart app module or that IAM application part would depend on a feature module like LMS, and LMS would depend on those third-party libraries or our internal libraries also. So here Abhishek want to tell you कि monolith app is something इसमें कि सारे modules एक साथ combine होते हैं। जैसे कि right now हमारी class है, इसके अंदर सारे modules एक साथ ही combine हैं। But what we are saying कि अब हम इस जो हमारे पास application होगी इसको features में break कर रहे होंगे, modules में break कर रहे होंगे कि LMS separate होगा, BMC separate होगा, backend separate होगा, आपका login process one time use होता है that will be separate. तो we are trying कि हम जितने भी छोटे-छोटे modules में इस app को divide कर सकते हैं, हम उसमें इसको divide कर रहे होंगे। तो divide करने के लिए एक तो ये होता है कि feature अपने आप में independent है। दूसरा जैसे कि let's say हर एक app के module में जो हम data लेके आ रहे होते हैं वो server से लाते हैं। तो it means हमें एक network pool चाहिए ही चाहिए। तभी हम server से connect कर पाएंगे, data लेके आएंगे। तो ये वाला काम हो गया। दूसरा ये हो गया कि हम generally caching कर रहे होते हैं कि कोई भी डाटा अगर है तो हम उसे लोकली अपने डीबी पे स्टोर करेंगे, और अगर यूजर की डिवाइस कनेक्ट नहीं है नेट से इन दैट टाइम हम वो कैशे वाला डाटा दिखा रहे होते हैं। तो ऐसे वाले कुछ फीचर्स हैं जो कोर फीचर्स हैं, ठीक है। उन कोर फीचर्स को वी आर सेइंग कि हम उन्हें कोर में रखेंगे। इसके अलावा शेयर में हम ऐसे कह रहे हैं कि जब भी आप कोई फीचर यूज करते हो तो कुछ कॉमन फंक्शनैलिटीज होती है कि जैसे कि आपको यूजर का डाटा चाहिए एवरी टाइम। कोई भी अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो जेल आईडी चाहिए, विदाउट जेल आईडी आप कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, इट इज ए मस्ट। जैसे कि आप टाइम स्टैम्प यूज करते हो तो टाइम स्टैम्प को एक डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखा रहे होते हो। तो ऐसे वाली जो चीजें हैं जो कि कॉमन है उनको हम कह रहे हैं शेयर। जैसे कि आपको लोगर दिखाना है, ये लगाना है, गूगल एनालिटिक्स हम हर एक मॉड्यूल में यूज करते हैं, राइट। तो ऐसे वाली चीजों को हम शेयर में लेके चले आएंगे। ये चीजें शेयर है और इनको every feature can use. So this is about this. But out is slide पे कोई any question? It means अभी ये क्लियर है कि monolith app क्या है, मल्टी मॉड्यूल पे हम कैसे कन्वर्ट कर रहे होंगे, क्या बना रहे हैं हम। ठीक है, तो कंटिन्यू। One point I would like to tell here is main app. When I say main app or the application classes depending on features, those features don't depend on each other. Like LMS won't know what BMC is. BMC won't know what LMS is. Profile section doesn't know anything about any other feature. So that's the strength of what we are talking here. Like the classes don't know about each other in the feature modules. So they have to be managed, or they should be told that if you want to do this work, then you have to go for that module. Next. So this is the current implementation. We have a, like I told, single module Android app.
all our features and resources are packed into it, and in the code its name is IndiaMart app module. Coming to the next slide, what are multi-module apps? So modularity is a technique to separate the functionality into independent and interchangeable modules, and each module contains everything to execute a specific functionality. So for example, if I try to show you here, we have our application class or the application module. They depend on the feature modules, and in turn they depends on the library modules. So uh, the modules, either they can execute a specific functionality or they together can work together to solve the work which we have assigned to them. What is a module? So module is a standalone piece of code that works independently. They represent a feature. We can say that the LMS module will be representing the LMS feature. The profile module will be representing the profile feature. And the beauty is that they don't disturb each other. If something if uh, uh, we are making changes in one module, so the modules which are my module is not dependent on, they won't get harmed by my behavior. They are easily pluggable with another modules having the same interface, and in the general software techniques, it provides us the low coupling and high cohesion. This is same slide like the current high level architecture. We have a monolith app, and all our features are jumbled together. And what we will be transitioning it to a modular app. There will be a application class. Like this is the picture which will look in later stage. Like we will having an application module, the feature modules, and they will be depending on the core and shared or the library modules. Say. Aritik, I had one question. जैसे कि अभी हम LMS प्रोडक्ट्स और माई प्रोफाइल में कैमरा मॉड्यूल यूज़ करते हैं, राइट? वो कैमरा लाइक एक है, वो तीनों पे यूज़ होता है, तो वो हमारा मोनोलिथ ऐप का मतलब डिपेंड हो गया एग्जाम्पल, राइट? वो कैमरा लाइक उस पर कुछ चेंज हुआ, वो तीनों पे इफेक्ट आ जाएगा. बट इफ यू गो फॉर द मॉड्यूलर ऐप, तो हर LMS प्रोडक्ट्स और माई प्रोफाइल के लिए कैमरा अलग होगा. रोहन, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सबके लिए आप मतलब जो कैमरा का मॉड्यूल है वो पर फीचर कर दें, पर आइडियली वो बेटर ऑप्शन नहीं होगा. आइडियली ऐसा होना चाहिए कि आपका एक कैमरा मॉड्यूल एक लाइब्रेरी बना दी और उसको सब जगह यूज़ कर लिया आपने, और फिर आप जो भी चेंज कर रहे हैं तो वो मतलब वो कैमरा मॉड्यूल में जो आपने चेंज किया वो कैमरा मॉड्यूल को तो अफेक्ट कर रहा है, पर वो LMS PMC और जो आपका प्रोडक्ट सेक्शन है उसको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर पा रहा है. आपका चेंज जो होगा वो कैमरा मॉड्यूल में होगा. आप उसको वैसे भी कर सकते हैं जैसे आप बोल रहे हैं पर फीचर कर दें, तो उस केस में तो अफेक्ट नहीं करता, पर आइडियली इट शुड बी अ लाइब्रेरी. So in the first phase we are separating the PBR module. So what we will be creating it as a PBR module we will separate, and it will be depending on the database is wrongly represented here. It is in this module only. So we have created separate network module, the separate database, and the shared module, user data, analytics, common classes, login. All these we have almost created. So what we have to do is we will be separate out or pull out the PBR from that IndiaMart app module, and we will depend on these common bases, and then one module will be ready, and then rest of us have to follow that.